everyone and a warm welcome to IFAS platform. Dear aspirants, here I am again with you people for you people to motivate you, to inspire you that dreams, goals that you wish to fulfill can be fulfilled if you are willing to do some amount of hard work as well as smart work. Today we have with us Sayatni Haldar. She has secured a very good rank in GATE Biotechnology examination. How she prepared for the examination, क्या क्या सब्जेक्ट्स टारगेट किए थे और किस तरह से एक बेहतरीन जर्नी रही उनकी गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन की, चलिए जानते हैं. एंड मोर इम्पोर्टेंटली डियर एस्पायरेंट्स, डोंट थिंक दैट क्या मुझसे हो पाएगा, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. Yes, dear aspirants, let's meet Sayatni Haldar. Hello, dear, and a heartiest congratulations to you. Hello, ma'am. Hello, everyone. So, I hope you are doing good and the party is over, Sayatni. Yes, ma'am. Almost. Yeah, I'm doing good. Okay. So, again, I will say securing good rank in GATE examination. Just introduce yourself to the audience, dear. Hello, viewers. This is Shantini Haldar. I am from West Bengal. I have pursued my BTech Biotechnology from Amit University, Kolkata. So you have completed your BTech? Yes, ma'am. On 2022, I just passed out. Just you have passed, and then clearing this examination. Further, what are your aims? Ma'am, I always want to pursue higher studies. For now, I want to pursue my MTech further. Okay, securing a good rank, 216 rank, Sayatni. Definitely you can get the top most NITs, IITs. अगर आप ट्राई करेंगे ICSIR, तो आप किसको चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे और किस तरह से further down the lane 2 to 5 years you see yourself? Ma'am, definitely I would like to choose the top IITs or the whatever through this rank I can get. And through this down the lane, I would like to see myself so that in the research line, and so that I can serve the society as much as I can with my knowledge, whatever I can gather through this study. Okay, Saitni. So how you came to know about IFAS? Ma'am, actually, previous year when I appeared for the GATE exam, so it was I did it all alone. So I was not sure that what is going to be the result, and since there on YouTube platform I watched certain videos. Those videos really cleared my concepts, and from there I decided that I should go for this IFAS platform. Okay. So, Sayatni, like right from learning the basics, then going towards the practice questions, what is your biggest strength while preparation, जिस पे आपने बहुत अच्छे से होल्ड किया, जो आपके ऑल इंडिया रैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Ma'am, I would like to say that being a biotech student, so all the subjects regarding the biotechnology, like the cell bio or the genetics, like the RDT, these are all this was my strength, all these subjects. But again, bioprocess was something which was little bit in a very much shared portion was I was afraid of. So that was not a part of it. But IFAS again helped me a lot to overcome that fear, and in that way I started preparing my preparations. ओके साइतनी. सो साइतनी, अगर मैं बात कर रही हूँ, रिजल्ट आ गया है, अभी आप कोप का फॉर्म फिल करेंगे एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर दी काउंसलिंग सेशंस एंड ऑल. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट है, एक वरी भी है, और आपकी जनरेशन, अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी जर्नी में, अगर अभी की जनरेशन की भी अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, कुछ ना कुछ हमें इतना एक्सपोजर मिलता रहता है. तो कैसे आपने पूरी एनर्जी चैनलाइज करी टूवर्ड्स योर स्टडी, क्योंकि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ होता है, तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के भी एन नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं. मैम, एक्चुअली है मेरे पास सिर्फ 2 ही ऐप्स, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. अगर हो सकता तो हाँ, हो सकता है कि इंस्टाग्राम से हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है. तो जब शुरू के दिनों में मैंने सोचा कि आई विल डू माई सेल्फ कंट्रोल, बट जैसे ही संडे टेस्ट देने लगी
तो उसमें जब मार्क्स थोड़ा कम आने लगा तो आई सेल्फ एनालाइज्ड माई सेल्फ, एंड ऑल्सो आई थॉट आई लाइक, अगर सोचते थे कि हाफ एन आवर उसमें दे देंगे इंस्टाग्राम में, बट वो हाफ एन आवर कब 1.5 आवर में टर्न हो जाता हमें पता ही नहीं चलता है। दैट्स द तो थिंग ना। तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल ही कर दिया एकदम। तो उसको छोड़ के ही मैंने सोचा कि व्हाट्सएप अगर हम रहने देंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस होता है थ्रू व्हाट्सएप, तो सिर्फ वही था, एंड आई फोकस्ड ऑन माय प्रिपरेशन। Okay, okay. So during your this complete preparation, what were the main things or the main points जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते रहे? क्योंकि देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ तो अप्स होंगे, लोज होंगे, जैसा आपने बोला संडे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग जाता है कि होगा या ना हमसे, एक हमारे सेल्फ बिलीफ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है. हाउ यू मैनेज्ड ऑल दैट लोज? Yes, ma'am. Actually, since I was already a passed out student, so I used to see that my friends, they are doing certain kind of jobs. Some are doing their own higher studies from different colleges. तो वो एक demotivation का part हमेशा रहता था. But again, I would say my friends, my family, they supported me a lot. They believed in me that मेरे अंदर वो potential है कि मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ, मैं ये क्रैक कर सकती हूँ। तो उन लोग ने बहुत मुझे हेल्प किया है। स्पेशली ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन द faculties of IFAS. They have like tremendously supported me during their online classes which I have done. There I used to tell like whatever problems I used to face, and they used to solve that immediately during the classes zone. Okay, okay. Fine, Saitni, that is really very good to know about, like कि हम किसी ना किसी वे में स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एंड वी आर ऑल्सो वेरी लकी इनफ टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू who are so much honest to their work and dedicated towards their study. Moving on, Saitni, कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपने कंप्लीट किया था गेट बायोटेक्नोलॉजी का? मैम शुरू तो हमने वही बायोकेमिस्ट्री से ही किया था। ऋषभ सर ने वो करवाया था। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे लाइक सेक्शन 2 के अंदर, एंड बेसिकली द बायो प्रोसेस पोर्शंस, क्योंकि वहाँ से एक मेजर शेयर आता है राइट. क्वेश्चंस के अंदर। तो वो पार्ट्स भी थे, वो पार्ट्स मैंने कवर किए थे। एंड डेफिनेटली बायोइन्फॉर्मेटिक्स पार्ट, सो इट इज़ ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस साल भी उसी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, तो वो वाला पार्ट भी था ऑलमोस्ट। ओके, ओके. सो मीन्स लाइक अगर मैं बात करती हूँ ऑन एन एवरेज आपने 70% सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया था. इवन वो टॉपिक्स भी किए थे जो जिससे दो दूसरे घबराते थे. आप भी पहले घबराते थे बट यू फिगर्ड इट आउट कि नहीं मैं कर सकती हूँ. एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस? हाउ यू डिड योर क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्योंकि एग्जाम में एमएसक्यू भी आता है, एनईटी भी आता है. Ma'am, actually the Sunday tests helped me a lot during if I talk about this question practice, and also the mock test which I gave in this IFS platform. The regular DPPs, they helped me really a lot. Again, the PYQs, the study materials which I actually received from IFS, there the PYQs was already there according to the syllabus. So I solved all those, and that grew, and that grew to help me like the concepts and all of that, and to finish the paper within time also. ओके, सो इतनी लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ, एक बुक है सिर्फ क्वेश्चंस की, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, और एक बुक है जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं. तो हम वो बुक क्यों प्रेफर करते हैं? जैसे डेफिनेटली आपने भी उसी बुक से पढ़ा, तो वो बुक प्रेफर क्यों करते हैं? ऐसा क्या है उस बुक में? क्योंकि आंसर तो ABCD इधर भी लिखा रहता है, पर मैं एक्सप्लेनेशन की बुक की तरफ क्यों जाती हूँ, या आप क्यों गए थे? यस मैम, एक्चुअली IFS में से जो बुक हमें जो दिया गया था, उसमें the explanation was also there. Actually, when we are solving the questions, so हम लोगों के माइंड में एक अलग ही एक्सप्लेनेशन रहता है, और हो सकता है कि अगर वो उसी क्वेश्चन का कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव से भी वो हो सकता है, सॉल्व हो सकता है. तो इफ आई यूज टू कंपेयर दोज लाइक द एक्सप्लेनेशन विच इज ऑलरेडी देयर एंड विच इज ऑलरेडी इन माई माइंड, so if it is like going hand in hand, they are parallel to each other, then I used to say like, okay, I'm on the right track.
अगर मैं कुछ दूसरी पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ, अगर वहाँ पे कुछ और है, तो मैं खुद को एनालाइज अच्छे से कर पाती थी। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी था उस बुक से मुझे जो मिला एक्चुअली। ओके ओके, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप किन सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। डिड यू Yes. रेफर्ड एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक्स फॉर एनी ऑफ द सोर्स, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ योर बीटी? मैम एक्चुअली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, इतना एम्पल टाइम तो रहता नहीं है, तो अगर फॉरेन बुक से या फिर फॉरेन ऑथर्स से अगर हम रेफरेंस बुक लेंगे तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बहुत टाइम एक इशू हो जाता है। तो आई ओनली रेफर टू दोज बुक्स एंड दोज स्टडी मटेरियल्स दैट वाज ओनली प्रोवाइडेड बाय IFAS। ओके ओके साइतनी, एंड नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अगर साइतनी मैं बात करती हूँ तो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या एक सक्सेस मंत्रा कहना चाहेंगी कि जो अभी अर्ली यंग बर्ड्स हैं कि ये पढ़ें या नहीं पढ़ें, कर लेंगे देख लेंगे, उन तक क्या मैसेज देखना चाहेंगी? कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्राई किया था बट दे हैव फेस्ड फेलियर, तो सभी तक एक क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? Since I have gone through this journey, so I can have this suggestion that there will be failures. So in my life, I always take this word fail as fight again in life. So whenever this word comes in my life, and if I know the full form what it is, then I never used to get more demotivated. If I say like fight again in life, fight again in life. So that is how I used to, I would like to tell you all that please always remember that don't get scared regarding the syllabus or the preparation. You just go on with the preparation, it will definitely happen. There is nothing called impossible. For me it is, if it is happening for you guys also, this will the same thing, the more good thing will happen with you. So And yes, good things take time. You need to Yes, give time. Yes. So, Saitni, really, you have said really golden words that it will take time, and if I can do it, definitely you people can do it. Moving on, Saitni, whom you admire as a role model in your life, whom like whose qualities you would like to imbibe in yourself, like whose qualities you. मैम जब से शुरू किया था ग्रेजुएशन, तब से तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रह चुके हैं, बट अगर मैं बात करूँ इसी प्रिपरेशन के लिए, तो जब भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में या फिर क्लासेस में मैं केसी सर के क्लासेस सुनती थी या फिर प्रांशु सर के क्लासेस सुनती थी, तो वो मुझे बहुत एनकरेज करता था कि मैं भी वो मकाम हासिल कर सकती हूँ, कि वो कुछ कर सकती हूँ मैं भी। वो लोग जो छोटे छोटे मोटिवेशन स्पीच पढ़ाई के बीच में देते थे, वो बहुत मुझे हेल्प किया एक्चुअली। नॉट ओनली दैट, ओनली सिर्फ पढ़ाई करते रहो, बट ऑल्सो द मोटिवेशनल स्पीच दैट दे यूज्ड टू गिव, एंड द स्माइल दे ऑलवेज टेक्स in their face, that nothing is impossible, that you can crack gate, you can get good marks also. So वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो वही लोग बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं। Okay, dear. Okay. So definitely, Sayatni, many more successes to come in your way. अभी के लिए, आज के लिए हम यही रुक जाते हैं. Anything also you would like to add to those students who are watching your video? Yes, again, I would say that don't get scared. Just prepare for this GATE exam as much as you can, and just give your hard work and give your best. It will crack. You will crack it, and you will get the best. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, and thank you so much for connecting and giving your time, Saitni. All the best from complete IFS family to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, dear viewers, dear learners who are here with us, we met Saitni Haldar, and what a girl, what a motion, I will say, कि पढ़ते रहना है, करते रहना है, धीरे से रिजल्ट आ जाएगा. Wishing her all the best wishes with her. And now, dear aspirants, to you, अगर आपने सोच लिया है तो देरी क्यों करना है? जल्दी से इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को. एंड डियर एस्पायरेंट्स, अगर आपने सेट कर लिया है तो अपनी गोल की तरफ रेस करते रहिए, क्योंकि आप उसे अचीव कर सकते हैं. इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट. एंड जल्दी मिलते हैं विथ न्यू सक्सेस स्टोरी. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी लर्निंग.